This job job challenge. He's not going to. He's not going to attend. Sanya, can you hear me? Yes, I can. Maybe क्या क्या ऐसे ही join किया. Zishan, can you hear me? Can you please confirm? मेरा ये volume off है. Ma'am, can you hear me? Because I can hear you. Yeah. Can anybody tell me whether they can hear me? Yes, I can. Okay. प्राजक्ता, I just asked Steven sir, तुम लोग का भी एक वैल्यूएटेड कोर्स शुरू होने वाला है 19 से, तो दोनों कैसे कर पाएगी तू बेटा? लेकिन मैम अभी तक हम लोग को कोई मैसेज नहीं आया है उसका. हाँ, इसीलिए मैंने सर को पूछा, तो सर ने बोला हम 19 को उनको मिलने वाले हैं ना फोटो के लिए, तब हम लोग अनाउंस करने वाले हैं. तो you attend if you want for 2 days, but if you can't complete ours and if you complete theirs, it will be better. ओके मैम. ओके, अभी तो अटेंड कर 2 दिन, पर 19 से तुम्हारा 19 से सर अनाउंस करेंगे और तुम्हारा भी शुरू होगा. ओके मैम, चलेगा. ओके. Okay, because I can't not ask you to attend mine and not attend. Yes, ma'am. So you can see me. Yes, ma'am. बहुत मुश्किल है वायर का. छोटा हो गया क्या? Okay. You can all hear me clearly. Online people also. Yes. Yes, ma'am. Okay, fine. So let's start. Today's course, which we are commencing from today, is going to last for 10 days. It's a value-added course on the cultural heritage of India. And this course is optional. It's not compulsory for you all to do it. But if you are enrolling for it, if you are doing it, you have to put in 30 hours of work. These 30 hours which we are expecting from you are in terms of the lectures which we are going to conduct, maybe a field trip if we can manage it, and your presentations which you will upload in the Google Classroom that is going to be made specially for this course. Okay, so for this value added course, you have to first understand what are the things that are going to be taught to you in this next 10 days. Expert faculty, expert guest lecturers are going to come regularly. As much as possible, we are trying to engage experts to come and address you. Some lectures, Snehal ma'am and myself also may cover if we do not get some resource persons, but majority will be covered by guest lecturers. And we expect that at least an equal amount of students will come offline. Otherwise, it becomes very, very dull for the resource persons also to engage you. Some of the resource persons will be coming offline. A few may join online. Okay. So all those who are joining this course, we expect you to attend each and every lecture, either online or offline, and complete the project work by 30th April. Then only you will be allowed to get that 2 credit. If you attend regularly and you are part of the deliberations, then you will get an A. For your total involvement in this value added course,
Right? So, where heritage of India. Now, culture. What is the meaning of heritage tourism previously, right? So, what is heritage? Online people, do you understand by heritage? It's all मैम एंगेज हो रहा है architecture and monument place. That's all. एंगेज हो रहा है क्या हो रहा है बेटा? मैम सुनाई बराबर नहीं दे रहा है अटक बोलना, जा रहा है कुछ बोल बीच रही बीच में है? हाँ मैम कट अटक हो जा रहा रहा है है बीच बीच अभी. में I can't help it. अभी ये फुल वाईफाई कॉलेज का वाईफाई है. ओके मैम अच्छा, चलेगा try your best, change your ओके मैम ओके Okay. हेरिटेज का मतलब मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस और आर्किटेक्चरल हेरिटेज ही है. इज दैट ऑल यू अंडरस्टैंड ऑफ हेरिटेज? व्हाट एल्स वुड कम एज हेरिटेज? अच्छा, हेरिटेज को अगर मराठी में ट्रांसलेट करोगे तो क्या वर्ड? कैन टेल मी हेरिटेज के लिए. ओके, बोल. सो व्हाट इज हेरिटेज? एक वर्ड में अगर बोलना है तो कोई वर्ड. Sustainable development is something different. All heritage need not be sustainable. We want it to be sustainable for the future. Yes. धरोहर सुना है आप लोगों ने? धरोहर. धरोहर क्या होता है? हाँ, मतलब जो आपके पास विरासत is also a word for dharohar. So heritage is something you get in virasat. Heritage is something you want that the future generations must not lose. Something is of value, something is which is so important that it should not vanish. Here we are talking about this whole course is going to focus on India's cultural heritage. Now in culture, so many aspects are included. Architecture is one thing. She said kala. Kala matlab arts. Different types of arts. Like, can you give examples? Dance, music, or dramas, puppetry, paintings. Okay, theater, cinema, हमारे theaters acting को let's put it up in the proper word. Dramas तो बोला, dramas, theaters, cinemas, और that is part of our cultural heritage. What else? Yes. Festivals, okay. Yes, festivals also. Rituals. Even crafts. कला जब बोलते हैं तो कला is not just painting. All different types of crafts. What about things that your mother made, which her mother taught her and passed, and is passed in your family? Culinary heritage, food culture, that is also part of our heritage, right? Recipes are passed down from generation to generation. Do you want those recipes to be lost? No, right? Epic has a whole serial on lost recipes. Why? Because our culinary heritage also matters. The way things were made in the past, we can't just completely get lost. I mean, we can't lose it. That is part of us. Everything that is heritage is part of us. It makes us. बेटा तुम लोग यहाँ से मत जाओ. अच्छा, Zishan was already in. अभी बंद कर दे नहीं तो echo होगा. Okay. So
What is heritage? Heritage is something that defines us as a civilization, as people. Now, you have heard this word tangible heritage and intangible heritage. Yes, ma'am has taught you. किसमें लिखा था? Notes में लिखा था. Okay, ठीक है. What is tangible? Tangible का मतलब क्या? Tangible, intangible. Tangible is something that you can see and touch. Correct. And what is intangible? We can feel. Intangible is something which we can feel, which we can experience. We cannot see and touch it. It may not have a physical presence. Okay. So then let us classify our heritage and tell me what would fall under tangible heritage, what would fall under intangible heritage. Everybody open a piece of paper and you list down what according you would fall under tangible heritage and what would fall under intangible heritage. चलो पेपर पेन निकल तो ले आए. Yes, the reaction. Introduction to cultural heritage. What is heritage? What is tangible intangible heritage is what I am explaining to you today. And I've also explained the framework of the whole course, correct? Today is just an introductory lecture. Okay, so tangible word का मतलब समझ में आया अभी आपको? Something which we can see and touch and which has got some kind of physical presence. And what is intangible heritage? Something which we can feel and experience. So now you know what is heritage. It is a kind of culture which we want to pass on to the future generations. It's like a virasat ya dharohar, something which belongs to us, which we want to preserve, which we feel is of value, which we feel is of beauty. So now you all see what is tangible heritage and what is tangible heritage. Make a list, column बनाकर tangible और intangible के अंदर क्या क्या आएगा वो बताओ मुझे. लिखो जीशान, लिखो बेटा. This course doesn't have an exam. It only has projects and it your input matters. तुम लोग कितना क्लास में इन्वॉल्व हो रहे हो, डेलिब्रेशन में भाग ले रहे हो. एग्जाम नहीं होगा, प्रोजेक्ट होगा. उसपे से ही ABC मार्क्स मिलेंगे, ABC ग्रेड मिलेगा. ये कोर्स में बाय हार्ट कुछ नहीं करना है, समझना है, इंटरनलाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है. 15 days नहीं, 10 दिन का ही कोर्स. You all also online, please make a list of what is tangible heritage, what is intangible heritage. Yes. Yes, I'm going to ask you all. अभी उसमें चीटिंग नहीं करना है, खुद का दिमाग लगाओ, सोचो. नहीं आए हैं, वो भी आए हैं. Come on, continue. कैसे हो? You are late for me to answer that question. वो 30 आवर्स में से प्लीज माइनस मत करना. वो घर पे मनाना पड़ता है मुझे. Okay, please write, otherwise we'll waste 10 minutes here. बाद में सोचो, लिखो. First the course, then we talk. Okay, let's finish this first. I don't want to waste this lecture. It's been getting recorded also. What is tangible and what is intangible? Think and tell me. Done. Everybody's written at least 4 points under each list. क्या उतना भी नहीं. NTANGIBL. Spelling समझ में आया? क्या चीज है वो नहीं समझ. Okay, fine. That's why I'm making this list so that I can explain it. ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मत लिखो उधर. जो समझ में आया उतना नहीं. Okay, everybody's made their list. I'm going to stop here and I'm going to ask. Jayanti, अरे जयंती बाकी. Sushma. Hello, Sushma. Have you made your list? मैम अब तक लिखा नहीं है. लिखा नहीं
है तो लिखो। जयंती तुमने लिखा कुछ? नहीं। Okay, fine. Let's see those who have written. Let's go from here. Akanksha, what have you written under intangible? Dance, music, food. Okay. And tangible? Okay. What have you written, Samruddhi? हम tangible में architecture है, archaeological evidence है, monuments है, places है, historical objects हैं, और intangible में legends हैं. Okay, very Stories good. Oral legends, और music. stories, music. What have you written? Tangible monument, structure, jewelry, Very good. Attire. Very सब So- गूगल से निकाल के Okay. बता रहे मैम। good. New things are being added. हमारा तू भी कुछ बोल रहा है, बता। बोल रहा सब गूगल से निकाल के लिखे कौन मैम। हुआ? क्या? गूगल कोई नहीं निकाल रहे, यहाँ पे मेरे सामने बैठे उनके पास फोन नहीं है बेटा, तुम लोग निकालो गूगल से, तुम्हारे पास ऑप्शन है। ओके मयूर, व्हाट हैव यू रिटन? ओके, तुम लोगों में से किसी ने लिखा है? अंजलि, डांस और सॉन्ग फॉर intent. Okay, some you are going on the correct way. What about you, Shraddha and Shruti? कुछ नया या अलग लिखा है जो लोगों ने बोला उसके सिवा? Games, game, yeah, intangible, yes. Okay, but उसका अगर physical object के form में वो games है तो that way tangible, but otherwise when games are passed on from generation to generation, that is also part of our heritage. It's part of our sports heritage. If you go to see, if forget chalo lukka chupi chodo, but what about chess? What about polo? What about all those games जो board पे खेलते थे पहले? सिर्फ सांप सीढ़ी नहीं, इंडिया में बहुत सारी गेम्स थे, वो चौपाई वगैरह जो मतलब ऐसे चौरस. प्लस टाइम का क्लॉथ रहता था, नहीं वो जुआ वो जो है वो भी कौड़ियों के साथ खेलते थे, घर पे भी खेलते थे, सिर्फ जुआ की तरह नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। मेरी दादी के गुल्ली जमाने डंडा। का भी वो क्लॉथ है मैम मेरे पास। चौसर चौसर चौसा गुल्ली चीज डंडा। का गिल्ली डंडा भी ठीक है, दैट्स आल्सो कंचा। जो हम अपने बच्चों को नहीं पास कर पा रहे क्योंकि अभी ऐसी जमीनें नहीं है, कंक्रीट में गिल्ली डंडा नहीं खेल सकते। ओके, सो गेम्स वेरी गुड। हाँ, और कोई? चौसर मैम। Martial arts also, yes. Martial weapons also, yes. तो सर कोई पोलो ही Martial बोलते arts हो में गया। correct. क्या? ओ थैंक यू। अमाद क्या बोल रहा है? चौसर बोलते तो मैं बोला चौसर कोई क्या? पोलो बोलते हैं। जोर से बोल बेटा, उधर बोल रहा हूँ तो कमेंट्स नहीं पोलो बोलते तो बोला ऑनलाइन है। पोलो कोई चौसर बोलते हैं। हाँ, पोलो को चौसर पोलो बोलते ना मैम। बोला, ओके फाइन। हाँ तू जो बोल रहा है सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। ओके, रहने दे अभी, रुक। निशान, स्टॉप इट। ओके, सो games, attire, music, dance, architecture, painting, all that is part of our heritage. Tangible is what we can experience, like food. We experience it. We can see it, we can touch it, but the manner in which the food is prepared, that kind of heritage, culinary heritage, is passed on from generation to generation. So that is why it is intangible. You won't call it tangible. Okay, what about rituals? किस तरह से पूजा पाठ परफॉर्म की जाती है, व्रत के वक्त क्या पाठ किया जाता है, या वर्ड के आगे पूछे घूम रहे हैं ड्यूरिंग अ सर्टन सावित्री व्रत की पूजा होती है, तो जिस तरह से मतलब पूरा रिचुअल कंडक्ट किया जाता है, that is also part of our heritage, right? That is not physical, it is something which we experience, something that we teach. The stories which are passed on in your families, oral legends, traditions, that is also part of heritage. So heritage is very, very vast. ठीक है?
Heritage is something which is very, very vast in nature. It comprises of almost everything which we want to send, which we want to save for the future, which we want to pass on from our generation to another. Now, you all tell me, in your family, how many of you still have a tradition of storytelling कि बच्चों को stories सुनाकर सुलाया जाता है? Okay, 1 or 2, 3, 4, ठीक है. आजकल अदरवाइज क्या हो रहा है, वो ट्रेडिशन लूज हो रहा है हमारे घर में मार के सुनाते हैं। यूट्यूब हाथ में थमा देते हैं. हाँ, बच्चों का आजकल हम यूट्यूब पे स्टोरी लगा देते हैं और बोलते हैं सुन के सो जाओ. वो जो एक कला थी स्टोरीज कहने की, जिससे हम कई वैल्यूज बच्चों को इम्पार्ट करते थे, कई चीजें उनको जो हम सिखाना चाहते थे, मॉरल वैल्यूज वगैरह, वो एक हेरिटेज है हमारा जो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है. राइट. सम वेरी वेरी एक्सक्लूसिव रेसिपीज वो भी लूज कर रहे हैं हम लोग. तुम्हारे घर में ऐसी कोई चीज बन रही थी जो अभी तुम्हें बराबर से बनानी नहीं आती है, जो तुम्हारी नानी और दादी बनाती है? ऐसा कोई कुछ फूड कल्चर में बता सकता है एग्जाम्पल? क्या? पिकल्स. मतलब मम्मी को नहीं आता है, दादी को आता था. वैसे कैसे टाइप का पिकल? कोई भी, कोई पर्टिकुलर पिकल जो तुम मिस कर रहे हो? मिर्ची का बनाते थे जो बाजार में नहीं मिलता है और मम्मी को भी नहीं आता है. अभी मम्मी से आगे नहीं आ रहा है. ओके, व्हाट अबाउट यू ऑल? गुलनार कुछ बोलना चाहेगी? गुलनार को खाना बनाना पसंद है इसलिए पूछ रही हूँ. गुलनार, एनी रेसिपी जो तुमने खास अपनी दादी या नानी से सीख ली है, क्योंकि तुम जानती हो कि अदरवाइज और कोई सिखाने वाला नहीं है, या मम्मी से सीख ली? क्या? दाल वाली थोड़ी कचौरी जैसा सीख लो, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा लगेगा तुमको कि अरे हमने वो सीखा नहीं और वो चला गया. बिकॉज इट कैन ओनली बी रेप्लिकेटेड बाय परफॉर्मेंस. सम थिंग्स लाइक थिएटर, फोक सॉन्ग्स. व्हाट अबाउट फोक सॉन्ग्स? तुम लोग को ऐसे कुछ गाने याद है जो शादी वगैरह पर गाती थी तुम्हारी नानी, दादी, मम्मी? Yes. So, I'm not talking about dinchak disco type songs. Traditional songs. Okay. Have you tried, now that you are history students, you should also become oral historians, and you should now start documenting some things which you feel is heritage, which you feel may get lost if you don't bother. It could be from recipe, it could be something about hairstyles, it could be something about some ritual or songs, or a kind of rangoli ka design which they have been doing, which you don't know how to do. It could be anything which you feel is important, and I want you all to document it and bring it tomorrow. किसी को भी पूछो, फोन लगाओ, नानी को, दादी को, मम्मी को. History project for you all. Not गाना हो सकता है. हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही है. हेलो. या फिर कोई ड्रेसिंग साड़ी पहनी, एम्ब्रॉयडरी आप में से
embroidery. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो Which you see around you, which is of मैम आवाज नहीं आ रही है। हमारी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मेरा माइक चालू है और इंटरनेट भी यहाँ पे फुल दिखा रहा है। मतलब अभी आ रही है, तो बीच में content बंद हो down है जाती क्या? है। हेलो, मैं एकदम खुला आसमान के नीचे बैठा हूँ मैम। अभी आ रही है, बीच बीच में गायब हो जाती है। I am not even leaving the mic area. हाँ Okay. अभी आई अभी आई। डॉक्यूमेंट करना मतलब लाओ, ठीक है, एक पेज लिखकर लाओ, उसके बारे में if you can try, if you can preserve it today, do it today. Disconnect करना है। See, if it is a song which you don't want to lose, write it down. If it is a ritual जिसका तुमको पद्धति नहीं मालूम है, तरीका नहीं मालूम है, तो step by step write it down and you can refer to it in the future. जैसे अचार का मसाला, जैसे उसने बोला ना पिकल, तुम्हें नहीं मालूम है वो अचार का मसाला कैसे बनाती है मम्मी, but you want to do it for future, you want it to be saved. Write down ingredients, process, पूरा. Document one thing which you think is a heritage belonging to your family, which you want to be preserved for yourself and for the future. ठीक है, सब सोचो, कुछ भी हो सकता है. हाँ, ask about games that your grandfather or father played, and you can document how it was played step by step. It could be, हाँ, तुम्हारे बच्चों को तुम बता सकते हो कि ये सारे गेम्स थे, ऐसे ऐसे खेला जाता है. अभी रेसलिंग इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड आर्ट, वो एक छोटे से इसमें पेज में फिट नहीं होगा, उसमें तो कितनी सारी ट्रिक्स रहती है. बट इट इज अ आर्ट which is getting lost. तो क्या आज कितने लोग जाते हैं अखाड़ा में उस तरह से ट्रेनिंग लेने को? जिम्नाजियम में जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, बट वो अखाड़े में उस तरह का जो उस्ताद के नीचे जो ट्रेनिंग दी जाती थी, कैसा खाना पीना रहता था रेसलर का, वो सब कल्चर धीरे धीरे वो भी वैनिश हो. Okay, so culture can be both tangible and intangible. अभी आज तुझे समझ में आया what is intangible? मतलब जिसको हम समझ सकते हैं, महसूस करते हैं, बट नहीं है उसका कोई फिजिकल हो, फिजिकल फॉर्म है, उसका कोई फिजिकल फॉर्म है. जो tangible है उसका कोई फिजिकल फॉर्म है. कल्चर, वो सब की बातें हमने नहीं की. इसके अंडर स्ट्रक्चर नहीं आता है, स्ट्रक्चर अलग है. ओके, बट इट्स पार्ट ऑफ फाइन स्ट्रक्चर. What is iconography? Yes, we will be having a iconography. Iconography is the message which you see in that piece of sculpture. Like है, या सरस्वती के हाथ क्यों है, या विष्णु शेषनाग क्यों लेटे हुए हैं. हाँ, मुकुट से पता चलता है कि कौन गॉड है, या उनके वाहन से पता चलता है, उनके सीट से पता चलता है कि कौन से भगवान है. All that is part of iconography. Right? In India, particularly, when we have a lot of idols, you also have something called iconography to understand. Iconography is part of our cultural heritage. Okay, you have to understand iconography to be able to understand sculpture. Besides sculpture, I was talking about textiles. What do you know about India's textiles? We will be having a lecture on textiles exclusively. पटन जो मेरे साथ आए थे, you saw how intensely those people were feeling of saving their textile heritage culture. इंजीनियर होकर भी वो लड़का बोल रही नहीं, मैं
पटोला बनाऊंगा। क्यों क्यों करूंगा? क्योंकि उसको मालूम है, अगर वो नहीं करेगा तो फ्यूचर में वो खत्म जाएगा। जो कल्चर है उसकी फैमिली ने विरासत पाया है, खत्म हो जाएगा। सो something which is very very different. You know, India has so many different types of textiles. हम उस दिन पटोला के बारे में पटोला की साड़ी भी बनाई जा सकती है, दुपट्टा भी बनाया जा सकता है। बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ क्लॉथ। नॉर्मली तो साड़ी ही बनती है, बट उसका जो वीविंग होता है, हैंड से बनाया जाता है, वो कैसे बनाया जाता है, वो एक अलग ही कला है और वो सबको आसानी से समझ में नहीं आएगी। कोई भी रिपीट करने को जाएगा कारीगर तो वो ऐसे ही नहीं सीख पाएगा। इट वुड टेक अ लॉट ऑफ secret tricks which is passed down from generation to generation, तभी वो possible हो पाएगा। So there are also people who make these imitation patolas, but original patola is made only by a few craftsmen, and that heritage is passed on within their family only, and that is in pattern। जैसे पटोला, वैसे पैठनी sarees of Maharashtra, बनारसी साड़ी, कसर सिल्क कैसे बनाते हैं, राइट, बांधनी। There is going to be one entire lecture on textile heritage. Plus, if you go to a museum, हमारा प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जिसको छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय के नाम से बुलाया जाता है, वहां पर भी एक पूरा सेक्शन है टेक्सटाइल हेरिटेज। वो ब्लॉक प्रिंटिंग भी कराते हैं। हाँ, ब्लॉक प्रिंटिंग भी कराते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग हम लोग जब जयपुर गए थे तब हमने भी देखा था कैसे वो लोग कपड़े पे प्रिंटिंग करते हैं। और हमारे दीपक सर भी आपको he will try to give you one lecture on painting because he is a very super painter। बहुत टाइप ऑफ पेंटिंग वो बनाते हैं, जैसे मधुबनी पेंटिंग्स है। मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में सुना है? सुना है पर दिखता कैसा है मालूम नहीं, गूगल सर्च करेंगे। कि मैं आज कुछ पीपीटी बनाकर नहीं आई क्योंकि एक्सपर्ट्स आपको सब दिखाने वाले और बताने वाले हैं। टेल यू कि ये सब भी हमारा हेरिटेज है। मैथिली पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है, गाली पेंटिंग है। So Saul knows a lot of types of paintings और कलमकारी वर्क है। उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बीच में वर्कशॉप भी किए। Whether you attended भी कर रहे थे, that's why that तुम लोग नहीं join। So there are so many traditional type of paintings। Modern art तो अलग ही चीज है, but every region of India has got a certain specific style of painting, which is of our cultural heritage, and we want to preserve. So we should learn more about these different types of paintings, from textiles to paintings. Plus, you have so many dance forms. Those also you need to understand India as a country, to understand its cultural history. Okay, remember history as heritage. This is what we are going to do in this course, right? We are also looking at whatever is there in history as heritage. So dance forms, you know that India has lots of classical dances. You did dances in your media paper, so you are not completely unacquainted with dances. Sir himself is an exponent of Odissi dance. Deepak sir knows Odissi, plus he knows a lot about various dance forms. So he will explain to you about the various zoology वाले से, various mudras, डांस से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, डांस एज अ मैनर ऑफ कम्युनिकेशन, डांस एज अवर हेरिटेज। ओके, सो डांसेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्लासिकल डांसेस डेफिनेटली आर इम्पोर्टेंट। फोक डांसेस को भी प्रिजर्व करना इतना ही इम्पोर्टेंट है। यू नो दैट देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स बीइंग अंडरटेकन बाय organizations to try and document folk dances, because certain tribes now they are becoming so small in number, they are not able to preserve their culture like before, they are not gathering or dancing in a manner like before. So unke dances, unke musical instruments, and you know
India is a mixture of so many cultures. It's a melting pot. You know, there's a type of music which is played by the Siddhis who came from Africa. Their music, if you listen to their music, there is a lot of African influence. Even today, they are settled in certain parts of Gujarat. There is a place called Ratanpur near Bharuch, where there is a big Siddhi population, and they are trying to, remove those agate stones and dealing in those agate stones. They send it later on for polishing to Cambay, and the future work is done by others in the lapidary business. Lapidary means stones. प्रेशर स्टोन्स जो बनते हैं ना, जो माला वगैरह में यूज होते हैं, तो एगेट ना मतलब अकीक वर्ड सुना होगा आपने। अकीक के पत्थर नेचुरली पाए जाते हैं, बटाटा जैसा दिखता है, लेकिन उसको पॉलिश करके उसको एकदम एक सुंदर प्रेशियस स्टोन बनाया जाता है। तो वो सिद्धि पॉपुलेशन रतनपुर में जो बसा हुआ है, उनका जो कल्चर है, उनका म्यूजिक, ऑल दैट इज even today so much influenced by their roots in Africa. So you have to explore these different types of heritage which is preserved in nooks and crannies of India, in nooks and parts of India, right? So music, whether it is folk dance, folk music, various types of paintings, various types of textiles, all that is part of our heritage. Now today you also have to start thinking about your project, because you have only 10 days to make the project. PPT project जो आप सबमिट करें, अभी आपको हेरिटेज क्या है मालूम है. Experts will come and give you talks. Okay, but if you delay deciding upon your topic, you get less days to work. तो आज ही आप फाइनल करो, सोच लो कि तुमको किस एस्पेक्ट ऑफ हेरिटेज पे अपना प्रोजेक्ट बनाना. I will also show you a few presentations जो पिछले साल के बच्चों ने सबमिट किए थे. बहुत सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशंस उन्होंने सबमिट. It could be related to dance, music, food culture, jewelry, anything. So आप jewelry of India, you can talk about jewelry designs in a certain community or whatever. आपको रिसर्च करना. ज्वेल लेके उसके बारे में बोल सकते हैं. एक ही ज्वेलरी के पीस पे पूरा. In general, you can talk about some designs which are common. See, you can do Google jewelry कर सकते हो, या फिर jewelry worn by Marathi people. You could even go and explore shops which are specializing only in jewelry, which people are चंद्रहार वगैरह, वो मालूम है, हमें नहीं मालूम है. Jewelry worn by Muslims could be any types of burqas. Even there are so many types. Currency में भी कर सकते हो coins, but again थोड़ा सा हाँ, coins are also depicting art sometimes, so it could be looked upon as heritage. India, India का related है, whatever topic take, India का related. Okay, just one second. क्या हुआ? ये सोच रहे बुरके में कितना टाइप है? बहुत ज्यादा टाइप है. Fashion, what about fashion? Fashion, hairstyles. There are so many sculptures which are studied only to understand the various type of hairstyles of ancient India. What ancient Indian women, how they braided their hair. There are people who are looking at sculptures to understand hairstyles. There are people looking at sculptures to understand footwear. हमने देखा भी था ना वहाँ पे सैंडल वाला एक इमेज पाटन में, प्लेटफॉर्म हिल्स वाला एक इमेज देखा था हमने पाटन में रानी की वाव में. वन ऑफ द लेडीज हैड वोन, और ऐसे वो पूरा पता चल रहा था ना, वो ऐसे पोजीशन में भी खड़ी हुई. द टाइप ऑफ फुटवेयर रिसर्च. पगड़ी एक टाइप्स ऑफ शूज थे उनके, हाँ स्कल्पचर में थे. और पगड़ी बड़ौदा में जब म्यूजियम में गए थे, वो एक पर्सन जो बड़ौदा म्यूजियम का प्रिंस था, उसने पूरा अपना PhD किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पगड़ीज पर.
This is all called micro history. पगड़ीज कितने टाइप के पगड़ीज डिस्प्ले? Yes, yes, she is there. Micro history. What is all this? You know, this is called micro history, where we are looking at something so specific to give us an overall picture of India's cultural heritage. Okay, so I want you all to come up with micro histories. बहुत book का political history बहुत पढ़ लिया. Now I want you to explore cultural histories. I want you to explore your histories. Okay, ठीक है. So सोचो what you want to do in this 1 or 2 days. Think and start working on your project topics. Because if you decide on the final day, it's going to be difficult. Now for your field trip, I was wondering if it is possible. I don't know. हम लोग का schedule बहुत tight है. I was thinking बहुत गर्मी है, but there are 2 possibilities, 3 possibilities actually. One is museum, guided tour of the museum जो last year हमने बच्चों के साथ किया था. हाँ, that is one option. The other option is going to Elephanta Caves. And the third option is Kanheri. तीनों में से एक ही करना. ये तीनों में से एलिफेंटा एक. चलो मैम, कल ही चलो. क्या हुआ बेटा अमन? एलिफेंटा चलो मैम, एलिफेंटा. क्या? एलिफेंटा चलो. एलिफेंटा चलो. ओके, हमारी वोटिंग ऑनलाइन नहीं देखना है, उसको आना पड़ेगा. ओके, अभी रखो फिर, अभी आजकल में. एलिफेंटा के लिए एक ही प्रॉब्लम है, धूप बहुत लगेगी. No, so we'll leave very early in the morning. We'll try to book a ferry and try to leave by 7:30. We should catch the ferry. Because we should finish and walk by 11:30, 12. I don't want, the hot sun on our heads. तुम लोग का रमजान खत्म होगा, उसके बाद लास्ट में ही रखेंगे फिर. 30 के बाद. वो हमारा फेयरवेल. अच्छी है. लास्ट टाइम हम लोग का लास्ट मीटिंग पॉइंट वाज प्रिंस ऑफ इंडिया. बाय टू द इसीलिए तो मीटिंग. ओके, नाउ आई एम जस्ट saying this, but मुझे मेरा शेड्यूल मालूम नहीं है. If it does not happen, it does not happen. We'll try, और I will send you all के तुम लोग जाके आओ और रिपोर्ट बनाओ. अगर मैं हमारे बिना नहीं जा सकते, माँ बाप नहीं भेजेंगे. कोर्स के लिए 1 किलोमीटर नहीं भेजेंगे. Fine. So you understand now the requirements of the course. You understand what is heritage and what are the type of lectures. Now Snehal ma'am is going to come here. She is going to tell you talk about some things. ठीक है, उन्होंने वो किस चीज पे बात कर रही है? I forget. She had told me, but I forget right now. So let her come. You all be seated here only. 12 के पहले खत्म होगा, उनको भी पेपर करेक्शन बहुत है. So I'll stop over here. You want to join again? I will end this meeting and you all can join in another 10 minutes again. ठीक है? Online people, I'm ending this ठीक है ना? meeting. ठीक है. You are able to understand everything. I'm sending an attendance form also. Attendance form WhatsApp group पे मैंने डाला है. नहीं, आईडी ऑनलाइन वालों का नहीं होगा ना. किसी प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, मैम को भेजती हूँ. मैम विल क्रिएट द अटेंडेंस लिंक. तो आज का अटेंडेंस ये देना मत भूलना. ओके, आई एम ending this for now. I'll take a screenshot of all the participants who have joined. मैम 2-3 लोग और थे, वापस चले गए लोग, लीव हो गए. 2-3 लोग और थे.
कौन थे? अरे वो प्राजक्ता करके कोई थी और एक पता नहीं कौन था। प्राजक्ता थी ना, I know प्राजक्ता was there. और तो प्राजक्ता कोई मस्त तो उसका था भी एक। कोर्स I'll send you. मैम ने डाला अटेंडेंस लिंक। अरे हाँ, जिस तरीके से बात कर Do you want to go to Harvard Business School? Okay. अरे यार, why is this coming? Is Microsoft coming in between? What's this? आप घर जाके मोबाइल की बात करने पड़ेगी। अच्छा, तुम लोग का एक जीपीएस वाला फोन ये भी लेना पड़ेगा फोटो। ये अरे वो अच्छा, this is all. साइन